Everyone. So in this video we will be solving a new problem which is closest neighbor in binary search tree. So let's see the problem statement. So problem is saying that we have given a root of a binary search tree and a number n. To find the greatest number in the binary search tree that is less than or equals to n. So we have to find the greatest number of in binary search tree that is less than equals to n. And we have given like if and he in this example you can see if n equals to 24, so the greatest number in the binary first tree that is less than or equal to n से छोटा या इक्वल नंबर कौन सा है यहाँ पर 21 है तो 21 we will return. So see it's a binary search tree, so there is a condition of binary search tree like the left node of that particular root node should be less than equals to the value of that left node of that particular root node should be less than or equal to less than actually less than the root data, and the right node of that particular node should be greater than the root data. Like you can see here the left 5 का लेफ्ट नोड कितना है 2 है. 2 की वैल्यू जो भी है लेफ्ट नोड की मान लो x होती तो x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए थी, और राइट में अगर वैल्यू थी y तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए थी. दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री. लाइक जो लेफ्ट की वैल्यू है वो रूट नोड से कम होगी ऑलवेज, और जो राइट वाली की वैल्यू है वो रूट नोड से ज़्यादा होगी ऑलवेज. यू कैन सी हियर ऑल्सो कि लेफ्ट वाली की वैल्यू कितनी है, रूट की वैल्यू कितनी है 2, सो लेफ्ट वाली की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए विच इज़ 1, एंड राइट वाली की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए विच इज़ 3. सो इट्स अ परफेक्ट बाइनरी सर्च ट्री. सो now let's see how we'll solve this problem. So before going forward in this video, please make sure that you have liked and subscribed to this channel. So now what we will do in this problem is let's directly do the code for this. By doing the code we will explain like int what I will do int answer equals to 0 that we have to return. Now what I will do is I'll apply a loop. कब तक अप्लाई करेंगे जब तक रूट है हमारे पास, ठीक है. इन दिस लूप व्हाट आई विल डू लाइक मैं एक एक रूट पर जाऊंगा, ठीक है, उसके लेफ्ट पर जाऊंगा राइट पर जाऊंगा, ठीक है. पहले एक रूट के जैसे रूट है, ठीक है, इसमें आंसर को स्टोर कर लूंगा आंसर इक्वल्स टू रूट की वैल्यू, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू आई विल गो ऑन राइट कि यार वो तो एक पॉसिबल आंसर है, रूट वाला आंसर तो एक पॉसिबल आंसर है, पर उसके राइट में भी जाते हैं, पर उसके लिए मेरे को एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. इससे भी पहले जाने से पहले एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इफ जो मेरी रूट की वैल्यू है, रूट की जो वैल्यू है, इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, लाइक greater than equals to, or we can say firstly we'll take like less than equals to n, sorry, if that value is less than equals to n dot, in that case what I will do कि रूट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब उससे बड़ी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बड़ी भी वैल्यू हमारी आंसर हो सकती है, ठीक है. लाइक रूट की वैल्यू है मेरे पास 4, ठीक है, और एन है मेरे पास 7. सो 4 से 7 के बीच में भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है. डेट इज इन दैट केस आई हैव टू गो इन राइट ऑल्सो. सो पहले मैं क्या करूंगा आंसर को स्टोर करा दूंगा रूट की वैल्यू से. नाउ आई विल गो टू राइट लाइक रूट इक्वल टू रूट का राइट, and in another case like else if case, if root की value is greater than n, if root की value is greater than n, in that case what I will do, यार मेरे को वो वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ठीक है. रूट की वैल्यू मान लो मेरे पास 7 है, ठीक है, और एन की वैल्यू है मेरे पास 5, सो मेरे को है ना रूट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा तो मेरे लेफ्ट में जाना पड़ेगा, बिकॉज आई नो दैट द लेफ्ट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट नोड शुड बी लेस देन द रूट डेटा. सो मेरे को उसमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो उसके लिए रूट इक्वल टू रूट का लेफ्ट. डन. सो what I have done is I have stored here, I have stored my answer root की value, and now I am going to write root का right. Now in this case I am going to root का left, and finally what I will do after this loop I will return my answer. So I return my answer. So now let's run this code and see if this will work or not. Actually this should be value नहीं की होनी चाहिए थी, एरर देगा, हटा दो इसको. ये की होनी चाहिए थी बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी हियर देयर इज अ की. सो इसको भी की बनाएंगे और इसको भी की बनाएंगे, ठीक है. नाउ आई थिंक इट विल वर्क परफेक्ट. लेट्स
again compile this. It is taking so much time, why it is saying that यही बेकार बात है. So now you can see here it is working perfect. Now let's submit this code. So there's a 1115 test cases. Why it is taking so much time? I don't know. Server is busy or not. Yeah. So it is giving me wrong answer in this test case. Like why it is giving me wrong answer? So it's correct. Okay. So it will initialize to -1. Now again let's submit this. Yeah, you can see here the all test case has a pass. Now 1115 test cases all I passed. So in this problem what I have done is simply that there is a condition of binary search tree, like left node should be less than the root data and right node should be greater than the root data. I am talking about the values of left and right nodes. So what I have done in this code is I have initialized my answer is -1, because we have to, if there is, if it is not possible then we will return -1, and I am applying a loop while my root is there. So I will check like if root key value is less than equals to n. Yeah, that is a perfect condition for me. So I will store the answer of that root data, answer equals to root की value, actually की है वो value बोलो, root का value. And now I'll check like इससे भी कोई बड़ा आंसर हो सकता है, लाइक अगर मेरे पास 4 है ये रूट की और n इक्वल टू 7 है, तो मैं सर्च करूंगा यार 4 से 7 के बीच में भी कोई वैल्यू पड़ी है या नहीं है. सो रूट की वैल्यू 4 है और मेरे को 4 से 7 के बीच में सर्च करना है, तो मेरे को बड़ी वैल्यू सर्च करनी है, तो इसलिए मैं कहाँ जाऊंगा, राइट में जाऊंगा, क्योंकि आई नो दैट द राइट वैल्यू ऑफ दैट रूट नोड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द रूट की वैल्यू. So मैं राइट में जाऊंगा. एंड इन अनदर केस लाइक इफ रूट की वैल्यू इज ग्रेटर देन एन, सो मैं जानता हूँ कि यार रूट की वैल्यू मेरे पास 7 है मान लो, अगर एन है 5, तो मेरे को जानना है कि यार एन जो रूट की वैल्यू होनी चाहिए वो एन से कम होनी चाहिए. इन दैट केस व्हाट आई डू, I'll simply go in left part, because I know that the left value of that root node should always be lesser than the root key value. So that's why I'm going in left side. And finally, I have returned my answer. So that is a simple code for this. So if you find this helpful, then please like, share, and subscribe. तब तक के लिए bye.